Hi guys, welcome back to my YouTube channel DU Scholars. Today we'll be covering the topic of pivot table, pivot charts and how to make the interactive dashboards using Excel. As promised in the recent video, I hope you have watched that video of topic where I covered moving averages, correlation and covariances. So let's hop into the today's video, that is about pivot tables, pivot charts and interactive dashboards. The theory part of this is covered, that means the interpretation, how to interpret this, is covered earlier in the videos. You may check it out on the channel, playlist is there. So let's start with this. First of all, this is the data set that I have taken. You can take any of the data set. I've taken this as it was suggested by our teachers, so I took this for the easy explanation part. So first of all, you can pause the video here and just note it down if you are doing with me, or if you have planned to do it later on, you can just take the screenshot so that you can practice it on your PC. Okay, first of all, select the data set. Selection is to be made, then Control T is to be pressed to convert this into table. Okay, then we have to insert pivot table. We have to go to insert tab right here, then go to pivot table. Here the data will be selected automatically. Now this was the dialog box I was talking about, that new worksheet may you want to open or in existing, so it is preferred to open in new worksheet only for easy viewing the data. So I'll click OK. Here is the everything pivot table is created, and we just need to drag and drop here the values as per our requirement. So if I wish to see sales of Delhi, I would place in filter, sales is the value that need to be calculated. So if I place right here, it is there, if in select Delhi, okay, so sales इतनी है in Delhi, बट इस सेल्स में क्या क्या किसकी 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 कौन सी सेल है, वी नीड टू चेक कि कौन से प्रोडक्ट की कौन सी सेल है. सो विल ड्रैग एंड ड्रॉप दिस इन रो, तो इसमें पता लग जाएगा बेल्ट्स की इतनी सेल है, हैंड्स ग्लव्स की इतनी है, मोबाइल्स की इतनी है, पैंट्स की इतनी है, शर्ट्स की इतनी है, राइट. एंड हमारे डेटा में कैटेगरीज भी थी, तो वी कैन ड्रॉप की कैटेगरी वाइज हमें दिख जाए. मेक श्योर आप इसको सही फॉर्मेट में करो तो कि आपके दिखना इजी हो जाए. एक्सेसरीज़ में जो बेल्ट है उसकी इतनी सेल है, क्लोथिंग में ये ऐसे ऐसे सेल है, उनकी पूरी बाइफिकेशन तुम्हें दिख जाएगी, राइट. Also, if you wish, you can place it in columns also, just about the visualization part, how you want कि कैसे दिखाई दे वो, it's your choice, जैसे मर्जी दिखा सकते हो, right. So I am keeping it in this format ताकि आपको अच्छे से दिख जाए. Okay, this is the pivot table, right. और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो डिफ़ॉल्ट होता है वो सम दिखता है, बट यू कैन चेंज इट इनटू एवरेज और एनीथिंग एल्स, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, एनीथिंग यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर wish as you are required to do. And now talking about how to insert pivot charts. First of all, selection. If I am selecting right here any blank cell, the pivot chart can't be inserted. We have to first go on that cell of pivot where pivot table is inserted in order to get this option. In the new Excel version, this options tab is called pivot table analysis, as we talked about in our theory video also. Here it is the option of pivot chart. You just have to click it. He will ask कि कौन सा आपको चाहिए, right, कोई भी आप ले सकते हो. Let's take the pie chart only. Here is the pie chart. Here you can just format it according to your wish, how you want to present. You can change the colors, texture, anything of this just from here. You can do anything, right. And the third part was slicer wala part that I was talking about. Slicer is something which is in the analyze tab right here.
you have to insert slicer. ही विल आस्क कि आपको स्लाइसर किस हिसाब से चलाना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मुझे सिटी के हिसाब से स्लाइसर चाहिए, तो सिटीज़ के नेम सारे आ जाएंगे एंड व्हेन आई सिलेक्टेड इट विल अपेयर. फॉर एग्जाम्पल आई एम मेकिंग ऑफ सिटी ओनली. यहाँ पर आ गया स्लाइसर, राइट. चेन्नई की सेल्स दिखा देगा वो सारा. यहाँ पे यू कैन चेक कि सारा चेंज होगा इफ एज एंड आई क्लिक दी टैब इन दी स्लाइसर. मुंबई का सारा डेटा आ जाएगा. चेन्नई का चाहिए, दिल्ली का चाहिए, इट विल चेंज अकॉर्डिंगली, राइट. यहाँ से भी यू कैन चेंज द सिटीज़ का नेम. दिस इज़ फॉर इजी व्यूइंग वाला थिंग. और इफ़ यू वांट कि सिर्फ मुझे क्लोथिंग वाला ही चाहिए, एक्सेसरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे नहीं देखना है, तो यू जस्ट हैव टू क्लिक राइट हेयर कि मुझे सिर्फ क्लोथिंग का चाहिए एंड क्लोथिंग का सारा डेटा आ जाएगा इधर भी, और इधर भी वही पाई चार्ट बन जाएगा. So this is the very powerful tool that is being used by every organization, even for the visualization purposes. Even the advanced version of this is there in Power BI or Tableau, or these advanced softwares are there where you can use the data visualization tools more effectively than this. This is basic part of Pivot, where we create these type of interactive dashboards using Excel only, right. So I hope you have understood everything that I taught you about in this video, and this is all for this video. I hope you like this. So you must ensure that you have press the like button, subscribe to the channel for more content related to business analytics, and comment below if you are understanding thing and what video you prefer to have next, so that I can plan the sequence of the videos accordingly. So thank you so much.